Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to understand the concept of primordial prevention. As there are various levels of prevention of a disease, which are primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, and quaternary prevention. But in this lecture, we will focus on primordial prevention of a disease. सबसे पहले तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में ये बात जानना ज़रूरी है कि दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज, कैंसर्स एंड डायबिटीज़. सो बेसिकली प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता क्या है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज़ the prevention of emergence or development of risk factors in countries or population groups in which they have not yet appeared. चूंकि किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में अभी रिस्क फैक्टर्स डेवलप ही नहीं हुए होते, तो हम उन रिस्क फैक्टर्स की डेवलपमेंट या इमर्जेंस को ही रोक देते हैं. एंड प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज एक्चुअली द प्राइमरी प्रिवेंशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. एज हम इसमें रिस्क फैक्टर्स की डेवलपमेंट को ही रोक देते हैं. और प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम करते किस तरह हैं? We focus on the children in their childhood and we discourage them to adopt the harmful lifestyles, such as we stop children from taking high sugar intake. हम उनमें स्मोकिंग की हैबिट को डेवलप होने से रोकते हैं. हम बच्चों में अनहेल्दी फूड और सीडेंट्री लाइफस्टाइल को डिस्करेज करते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होते हैं वो उनमें डेवलप ही ना हो. As some risk factors such as hypertension, obesity have their origin in early childhood, so we have to control and stop them in childhood. So here are some MCQs about this topic. Primordial prevention primarily focuses on options and treating existing health conditions, preventing the development of risk factors, managing chronic heart diseases, and providing surgical interventions. So answer is option B, that is preventing the development of risk factors. Next MCQs is, which of the following is a key message of primordial prevention? Treat risk factors when they develop, prevent risk factors from developing in the first place, ignore lifestyle choices, they don't affect heart health, medications are the only solution for health problems. And answer is option B, that is prevent risk factors from developing in the first place. Next MCQs is, primordial prevention focuses on preventing the dash of risk factors that can lead to cardiovascular diseases. Options are treatment, development, management, and diagnosis. And the answer is B option, that is development. And here is a fill in the blank question. Primordial prevention focuses on discouraging unhealthy lifestyles in, and the answer is in childhood. थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.